Hello guys, just 2 minutes actually. I'm sorting the live session. Okay, just 2 minutes. Behold, I'm here only. Hey, hi Vishwanath. Panduranga, hi. Cool. Guys, just 2 minutes. Okay, how are you all? That's great. Sorry guys, actually I had a class. That's why I came little late. That's why this much of circus today. Okay, just 1 minute. I will sort out everything. Just a minute. Yes. Hi, hello everyone. Sorry, it's being late, I know. Okay, shall we start? Am I audible right for everyone? Let me know. Thank you for bearing the time. Am I audible right for everyone? If you are feeling my voice is not properly audible, miss, please let me know in a chat box. That's great. You people are giving sign also. I'm observing that. That's great. That's great. Okay, guys. Yeah. Actually, I given host and co-host only, right? क्या कर रहे हैं यार तुम लोगों? Okay, we'll start today's session, guys. Actually, today's class is all about Kepler's law. Yesterday already I told you last concept of the day. Kepler's law के बारे में होता है. And what are the satellites? Okay, satellites के बारे में बात करते हैं हम आज. And as well as the orbital velocity. Yesterday we didn't completed this concept. Orbital velocity क्या होता है? But already I given an idea about the orbital velocity 3 days back. Means 3 classes back itself. Once again, we will discuss today, then you will get an idea, and few good numericals we will solve today class. Okay, these are all the points which we are going to cover in this today's class. Okay, and then move to the first concept, orbital velocity. We'll jump to the orbital velocity only. Before that, I will just give an idea what we discussed in the last point of the class. Right, last point of a class what we discussed. मान लो this is Earth. Earth के ऊपर आप इधर खड़े हैं. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. आपके in your hand there is a stone. What you will do if you're going to throw the stone means first with a minimum velocity it will come and fall here. With the first velocity I'm going to call this one as an v1. If I'm going to increase my velocity, v1 velocity के बहुत ज़्यादा velocity से I'm going to throw it means it will come and it will be fall here. This is v2. If I further throw the stone with a greater velocity of the v2, with a greater velocity of v2, the stone will start to move around this earth. अर्थ के आसपास घूमने स्टार्ट करता है. This particular velocity what I throw here to revolve around the earth, the minimum velocity which I throw to revolve this object mass m around the earth, this velocity we call this one as an orbital velocity. We will talk about this one today. Okay, greater this one orbital velocity के ज्यादा means एक अर्थ है, correct ना? अर्थ certain distance the mass is here means it will pull the mass towards it, correct ना? एक gravitation field के अंदर. If I throw the object come from this pull, ಅಲ್ಲಿ pull ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ velocity ನಾನು ಏನಾದರೂ throw ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I throw the object greater the earth gravitational pull,
what will be happen? Object will escape from the earth gravity and it will be move like this, correct now, and it will never come to earth surface again. It will say tata goodbye, correct now. This particular velocity, what we need to give for that small mass m to overcome from the gravitational pull, we call this velocity as an escaping velocity, correct ना. And escaping velocity में path कौन सा होता है? Yes, obviously, right guys. That's great, that's great. Escaping velocity में कौन सा path लेता है object? You know, I will give the two option. First option है, second option है parabolic. Yes, that's great. Parabolic path it will take, correct ना, and it will be escape from the earth surface. Clear enough? And then we solve the equation for the escaping velocity also. Escaping velocity के लिए equation आ गया था gm divided by r, small r आ गया था, correct ना. If in case we are going to treat this r as in capital R, at the time what we will do, gm divided by r we will write for a near the earth surface. Few planet satellites होता है, they are revolving around the earth around 200-300 kilometers में. Okay, that for that reason we put here. Okay, then after gm को replace किया हम g r square से, then escaping velocity इधर square था ना, right, दोनों equations, right, under root of 2gr आ गया था, sorry, under root of 2gr. This is the final answer what we obtained in a last class, right. And if you put the value of g and r value, escaping velocity आता है around 11.2 kilometer per second. In this velocity, if you throw the object, means it will never come to earth surface again. Okay, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನಿದೆ ವಸ್ತುಗಳು ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Clear? Okay, this is all about the escaping velocity. Hope it is understood to everyone, right? Let me know. Let me know everyone. Everyone, Rutuja, Change Chitradurga, Bijapur, yes, Ballari. Great, great. Yes. Okay, today we'll talk about the orbital velocity. I told you guys, orbital velocity क्या होता है? With a minimum velocity, what you are going to throw the object of mass m. Okay, what it will do? It will start to revolve around this planet like this in a circular orbit में revolve होता है. What is that minimum velocity? We need to find out. मान लो that mass I already thrown. Okay, when it is actually revolving around the earth at a distance क्या होता है? r from the center of the capital mass m. ये planet का mass होता है. Okay, and when it is revolving, guys, when it is revolving, इसके ऊपर two forces will be acting always. One is towards the center, that is we called centripetal force, correct ना. Centripetal force के लिए equation होता है Fc is equal to mv square by r. This is due to small mass mv square by r, right. This centripetal force is provided by the gravitational field attraction between the two masses. ये दोनों मास के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ना, that force will give the centripetal force. Here gravitational field will be g capital mass small mass divided by r square. We know these two equations well, right. And I told you these two are all equal, correct now. If they are equal means we can write like this also, Fc is equal to Fg. We want only orbital velocity. What is the velocity which is revolving, means object which is revolving around the certain orbit in a around the planet, we need to find out, correct ना. Fc value क्या है? लिख दो इधर, m is equal to Fg value क्या है? small m divided by r square. इधर एक r से r मर गया, एक small m से small m मर गया, then v square value will be equal to gm divided by r आता है, correct ना. And then v value, this is the orbital velocity, means that's why I'm going to return this one as an v naught. V naught stands for, guys, orbital velocity. लिख दो इसको, orbital velocity,
correct now. Here if I'm going to take the square to right hand side, then it will become under root, then v naught value will be equal to under root of gm divided by r hota hai. This is the orbital velocity. Clear hai na? Up to this point is clear, right? देखो इधर, this is the orbit, you may be take, no problem. Okay, meanwhile if you're getting any doubt means please drop your doubt in a chat box. Clear hai na? Once more. Hey, sure. Actually any object which is revolving around the earth means planet के around घूम रहा है means इसके ऊपर मान लो ये small mass m है. Just a minute. क्या होगा इधर? Okay, लो इधर बोल रहा हूँ मैंने. Okay, मान लो this is earth, इधर ये ऑर्बिट के ऊपर any mass which is moving means a mass move हो रहा है with some velocity. आप फेंकते हैं ना इधर से इधर फेंकने से क्या होता है? It will be start to revolving around this orbit. Correct ना? Due to this mass, ये दोनों mass के बीच में एक force होता है. This is called the gravitational force. Force होता है ना? That one. ये gravitational force will be G capital M small m divided by R square. This is the concept we started from the beginning. Okay, and then if a mass which is moving around the planet means it is just due to centripetal force. एक force होता है इधर means इसका velocity in this direction होता है ना. Okay, E point में E point का आता है in this point. मान लो point A में E direction में था velocity. Point B पर direction of velocity will be in this direction. Why? Because there is a centripetal force will be exist towards the center. This centripetal force क्या करता है ना, each and every point में object को towards the center pull करता है, इसे बाहर जाने के नहीं छोड़ता है, उलगड़े pull मारता है रहता है. That is called the centripetal force. This centripetal force is actually provided by the gravitational force. That's why we call centripetal force is equal to gravitational force. Centripetal force की equation तोंडे mv square by r. इधर circular motion al बरता. Okay, it will come from the circular motion, right? ये दोनों force equal होता है. That's why equate these two. While equating, you will get an answer. V is equal to under root of gr. V is equal to under root of gr. We call this one as an orbital velocity. G value आपको पता है 9.8 meter per second square. R value also you know, it is 6,400 kilometer. Substitute here, substitute करो, आपको orbital velocity मिलता है around 8 kilometer per second. G value near you take 10 ले लो, आता है. Orbital velocity bro, I'm talking about orbital velocity. Root 2 gr will be escaping velocity. देखो मैं क्या किया इधर. I will tell you. इधर देखो, इधर equation v naught is equal to gm by r था ना. I will solve this one. देखो इधर, देखो solve करता हूँ, आपका doubt clear होता है. v is equal to under root of gm divided by r था, total under root. Correct ना? Okay, देखो एक बार. Okay, gm we will write as an g r square when the object is very near to the earth surface. At the time, this is small r, no, small r. R value we will take capital R, कोई बात नहीं. Okay, then it's equal to gm means here g r square divided by r का replace करना है r से. R cancel होता है, remaining will be under root of g into r. This is the orbital velocity. ठीक है ना? Yes, that's good. 8 kilometer per second होता है. Escaping velocity कितना था? 11.2 kilometer per second. Clear? Okay, लिख दो इसको, कोई चिंता मत करना, just equation याद करना है. Escaping velocity means escaping velocity will be equal to under root of 2 gr. इधर orbital velocity will be
रूट जी आर, स्मॉल डिफरेंस है, दैट्स इट. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू. स्टार. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इधर भी वही था, ऑर्बिटल वेलोसिटी, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट. क्या है वो? सेम ही है ना, छोड़ दो उसको. और कुछ करना है क्या इधर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट वर्किंग एक्चुअली. हाँ, this is very important, guys. Actually, this is the question: what is the relation between escaping velocity and as well as the orbital velocity? The answer is no. They're asking the relation between escaping velocity and as well as orbital velocity. Before I will give the answer anyway. I want to know one more point from your end: whether orbital velocity is greater or escaping velocity is greater one. Greater one, which is the greater one? Let me know which is greater. Orbital velocity or escaping velocity? Escaping velocity or orbital velocity? Which is greater? Hey. Escaping velocity is greater. क्योंकि ना, when you throw the object, it will start to rotate, means उसका velocity कम होता है. More than the orbital velocity, if you're going to throw, means it will be escape from the earth gravity. That's why escaping velocity is greater. We'll prove this one. We'll prove. Then you will get an idea. Escaping velocity के लिए equation क्या बनता है? V is equal to under root of 2gr होता है. Call equation number 1. Okay. Orbital velocity के लिए equation क्या होता है? Under root of gr होता है. Call equation number 2. Relation चाहिए ये दोनों को बीच में क्या है? क्या करता हूं मैंने? डिवाइड करता हूं इक्वेशन 1 by 2. डिवाइड कर लो. देन देखो इधर velocity by orbital will be equal to इधर under root of 2gr divided by under root of gr. इधर root gr cancel. Remaining thing will be under root 2 divided by 1 is equal to v by v naught. Escaping velocity divided by orbital velocity. Correct? देखो इधर escaping velocity will be equal to, if I'm going to take this one to right hand side, means under root of 2, correct, means escaping velocity will be equal होता है orbital velocity को when you're going to multiply with a numerical value root 2. Right? What I'm saying, escaping velocity will be equal to orbital velocity. किसको? orbital velocity को equal होता है when you are going to multiply this quantity with a root 2, means escaping velocity is greater one. Clear है ना ये concept? समझ में आया ना? Yes Trishna, good. Okay, और एक नीट क्वेश्चन लेते हैं हम. नीट क्वेश्चन क्या था? What is the difference between escaping velocity and as well as the orbital velocity? What is the difference? Let me know in a chat box. What is the answer for this one? Difference between the escaping velocity and as well as the root 2. Hey. डिफरेंस बोल रहा है यार मैंने, रूट 2 कैसे होता है? डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस करना. देखो इधर एक्चुअली इसके इक्वल टू ऑफ, करेक्ट ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट. डिफरेंस कैलकुलेट करना. एस्केपिंग वेलोसिटी का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. ऑर्बिटल वेलोसिटी नो ओनली वी सॉल्व, आई टोल्ड यू दैट अंडर रूट ऑफ जीआर करो, राइट. अंडर रूट ऑफ जीआर मींस जी 10 ले लो, इंटू आर मींस
6400 किलो मीन्स 10⁻⁻³ होता है, मीटर होता है, करेक्ट है ना? सब कुछ ठीक है। 10 है, 10⁻³ है, ये दोनों पावर ऐड करो, राइट, ऐड करो, क्या होता है 6400 इंटू 10⁻⁴ होता है ना, राइट? इफ आई एम गोइंग स्पीड मीन्स लेट मी नो, ओके? एंड देन अगेन इधर 6400 है, इसको मैं क्या करता हूं, मैंने 64 इंटू 100, 100 मीन्स 10 स्क्वायर, 6400 इंटू 10⁻⁴ करता हूं मैंने। अगेन बेस इज सेम, ऐड द इंडेक्स, करेक्ट ना? इंडेक्स ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा ओवरलैप आ गया इधर, देखो 10⁻⁴, अगेन अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 10⁻⁶ होता है, 6 को बाहर लेने से क्या आता है 10⁻3, अंडर रूट ऑफ 64 मीन्स 8 इंटू 10⁻3, it is nothing but 8, this is kilometer per second. This is what the orbital velocity. Now how to solve, I told you. Actually have a little network issue today, actually rain आ रहा है, ओके, बारिश आ रहा है थोड़ा, इसलिए ओके। इधर क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, डिफरेंस इट विल बी 11.2 माइनस 8, क्या होता है 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर ना? आ रहे हैं, वी ए भी लिख दो, v माइनस वीवो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr माइनस अंडर रूट ऑफ gr, ये दोनों इक्वेशन में gr इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, right? What I'm saying, gr is a constant quantity, take it outside this two term, then it will become under root of gr. If you want to take the under root of gr constant means common term means here it will be under root, yes, that's great. Is it clear, right? Difference clear हो गया ना? Understood, right? Difference, how to take the difference between orbital velocity and as well as the escaping velocity. और क्या करना है आज? Okay, that's great. That's great. That's great. Cool, guys. Meanwhile, if you are getting any doubt, means let me know. Okay, next quantity है time period. क्या होता है for time? आपको पता है ना, मान लो दिस इज अर्थ, ओके, उसका मास क्या है, इधर एक स्मॉल मास है, स्मॉल मास ऑफ m which is moving around the earth with a velocity, vivo velocity में move हो रहा है, then what will be its time period? पूछ रहा है, time period it is nothing but guys, how much time this mass will take to complete on this rotation, to complete this one revolution, how much time it will take, that is known as the time period. क्लियर है ना? टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करता है? सिंपल है यार, आपको पता नहीं ऑल्सो यू कैन आल्सो सॉल्व दिस वन, सिंपल है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड पता है ना आपको, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये टाइम है ना, दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड वी नीड टू कैलकुलेट, बट हियर वी विल पुट टाइम पीरियड मींस कैपिटल T as a term we will take, right? Take T to the here, take V to here, okay, then it will become T is equal to D by V होता है, V it is nothing but orbital velocity, T is nothing but here capital T, time period. Clear है ना? Next, distance, how much it will cover for a complete circle. So now what will be the distance covered by the particle of mass m to complete this circle? I want, what is the distance? Jane Vichitradurga, Vidapura, Ballari, Rutuja, Trishna, में is the distance? Distance क्या होता है?
When an object it completes one circle means distance क्या होता है? अरे यार, what happened? Yes, R is from the mass to the center of the mass. Okay, then distance will become 2 pi r orbiting around the Earth surface. That's why we need to keep here orbital velocity. ऑर्बिटेशन क्या आ गया था हमारा पास? अंडर रूट ऑफ आर आ गया था. यस, गुड. अयो यार, actually internet is not working today properly. I will do one thing, I will switch off my camera, then it will be clear. That's great. Now check it once. My voice is correct, right? Now let me know. Let me know now. Is my voice clear now? Yes. Yes, that's great, that's great. Okay, 2gm by r आ गया. देखो क्या क्या होता है इक्वेशन इधर. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 2 पाई r इधर ही है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm लिख लूंगा इधर. इधर r है ना डिनोमिनेटर में, इसको क्या लिखता हूं मैंने? अंडर रूट ऑफ r लिखता हूं, राइट? दिस अंडर रूट ऑफ r इज नथिंग बट r टू द पावर ऑफ 1/2. शैल आई राइट दिस वन एज एन r टू द पावर ऑफ 1/2? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो, this is numerator, denominator, denominator of the denominator comes to numerator, correct now? Then 2 pi r divided by under root of gm, this r to the power of plus 1/2, if it is comes to here means plus 1/2 होता है, then r to the power of plus 1/2. r दोनों चीज सेम है, पावर को ऐड करो. पावर को क्या करना है? आई शेट, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಲಿಸನ್, ಡೂ ಲಿಸನ್. 2 pi r divided by orbital velocity gm by r. इधर r है ना, I will take this r outside of the square root. That's why I will write r to the power of plus 1/2. डिनोमिनेटर में है, denominator of the denominator comes to numerator, hence it will be r to the power of plus 1/2. Where? हाँ, ये सैटेलाइट का है, सॉरी मास अर्थ का है, gm कैपिटल m. ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू gm कैपिटल m divided by r. That day I told you, just remember, here velocity of the object which is revolving, it doesn't depend on their own mass. ये मास के, ये वेलोसिटी है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द कैपिटल मास m. कैपिटल मास m के ऊपर डिपेंड होता है. कूल, क्लियर? just give a sign there. Yes, okay, that's great. Here r to the power of 1 plus r to the power of 1/2 होता है. ये दोनों को ऐड करने से r 2 pi r to the power of, I will write 3/2 divided by under root of gm. This is what we called time period equation. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? No need to remember all those things. No need to remember all those things. ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Here I will do one short change. One short change ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. What is that short change? Do you know, guys? Anyone? Here I'm going to take this quantity as a constant c. Okay, then t value will be equal to 3/2. Yes, I will tell you. I will tell you, guys. Okay, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ತೃಷ್ಣ. Listen here. 2 pi divided by under root of gm, either r to the power of 1/2. r to the power of 1/2. r bases are same.
बेस विल बी सेम मींस वी विल ऐड द इंडेक्स, इंडेक्स को ऐड करना है। इधर r टू द पावर ऑफ कुछ भी नहीं है मींस इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, देन 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm, इधर r टू द पावर लिखना है r टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1/2। सिंपल है, आपको पता है ना। देखो इधर सुनो, 10 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 होता है, तो क्या करते हैं आप 10 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 करते हैं ना। बेसेस आर सेम मींस वी विल ऐड द इंडेक्स, राइट। सिमिलर कहानी इधर भी, बेसेस आर सेम, आर बेस है इधर। यस, गुड गुड गुड। Just a minute, I will rub this one. Those who are not understanding means please pass your doubt. Okay, I will clear everything. Then this is I'm going to take c as a constant, r to the power of 3/2 हो गया। इधर एक great equation आता है, remember always, इधर constant c है, that's why I'm writing t is proportional to r to the power of 3/2। अरे यार r to the power of 3/2 है, क्या करना है again? What I will do? I will square on both the side स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करने से क्या मिलता है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करने से दिस 1/2 और स्क्वायर विल बी कैंसल होता है। देखो इधर r टू द पावर ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर कैंसल हो गया, देन टी स्क्वायर वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर ऑफ 3 होता है। जस्ट रिमेंबर ऑलवेज this value we will use in Kepler's law। Kepler's third law होता है ना, उधर यूज करते हैं, but at that moment we are not using the value of r, we will use semi major axis, ये cube we will write, कोई प्रॉब्लम नहीं। up to this point remember like this, t square is proportional to r cube। क्लियर है ना? ज्यादा टाइम हो गया इसको। Clear, right? Hope it is clear. और एक इक्वेशन लिखता हूं मैंने इसको, क्या है देखो इधर, और एक क्या होता है, what I will do, no, actually this is a famous equation, you guys already know, time period is equal to simple pendulum ने 2 pi root of L by G will write, no, in that format I will write the time period, right? क्या करता हूं मैंने, ये इक्वेशन लेता हूं मैंने, here it is a time period, no, this equation I will take, or else I will take this equation, ये इक्वेशन ले रहा हूं मैंने, time period is equal to 2 pi r divided by under root of gm divided by r है, gm by r। if the satellite is very near, our planet is very near to the earth surface means r value we will take as an capital R, कैपिटल R को इक्वेट करते हैं हम r वैल्यू, ठीक है ना ये बात भी? ओके, दैट्स ग्रेट। एंड इफ आई पुट द वैल्यू हियर, टाइम पीरियड क्या आता है देखो, इधर से करता हूं मैंने, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm को gr² लिखते हैं मैंने, डिवाइडेड बाय r होता है, r को r रिप्लेस किया, gm को gr से रिप्लेस कर दिया मैंने। क्लियर है ना? इधर एक r², r कैंसल हो गया, रिमेनिंग टर्म विल बी हियर 2 पाई r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gr, करेक्ट व्हाट आई एम राइटिंग। एंड देन नेक्स्ट देखो 2 पाई, ये r है ना, इस r को मैंने लिख रहा हूं रूट r इंटू रूट r, रूट r इंटू रूट r मीन्स रूट ऑफ r² होता है, स्क्वायर रूट कैंसल होके r ही मिलता है हमको, डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट ऑफ gr, इधर एक रूट एंड r, ये रूट r कैंसल हो गया। क्या कर रहा हूं मैंने, देखो इधर, देखो इधर एक रूट r, ए रूट r से कैंसल हो गया,
रिमेनिंग थिंग क्या मिलता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय रूट जी मिलता है, करेक्ट ना। इधर देख, ये दोनों को रूट है, सिंपली एक ही रूट में लिख दो इसको, देन इट विल बिकम 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। दिस इज द फेमस इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फेमस इक्वेशन कौन सा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। इन सिंपल पेंडुलम आपको पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ऑसिलेशंस में पढ़ा था इसको, करेक्ट ना। होप इट इज क्लियर, राइट। दिस इक्वेशन ट्राई टू रिमेंबर ऑलवेज, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। दिस इज द इक्वेशन which is asked in NEET question also. What is the time period for a satellite or planet which is revolving around the planet? Sorry, satellite which is revolving around the planet. Clear? Is it clear? I want to know, is it clear, right? Once again, second part. Sure, sure. क्या ले लिया मैंने, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय जीएम है ना, ये इक्वेशन ले लिया मैंने। ओके, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय जीएम बाय आर था। व्हेन आर वैल्यू इज इक्वल टू आर मींस नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट और अर्थ, आर वैल्यू इक्वल्स टू आर होता है। इधर 2 पाई स्मॉल आर के प्लेस में कैपिटल आर आ गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जीएम बाय आर था ना, जीएम को मैंने लिख दिया जी आर स्क्वायर। कैसे, आपको पता है ना, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही इक्वेशन से क्या लिखते हैं हम, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। ओके, हियर आई रिप्लेस दैट जी आर स्क्वायर, करेक्ट ना। डिवाइडेड बाय आर को अगेन स्मॉल आर इज बिकम कैपिटल आर, हेंस 1 आर कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ जी आर मिल गया। इधर इन न्यूमरेटर पार्ट में क्या था, कैपिटल आर है, in numerator capital R, in denominator under root of GR है, right? That's why he in this numerator R को मैंने लिख दिया root R into root R. root R into root R means root of R square होता है, square root cancel होने से R ही मिलता है हमको। cool. And then in denominator also root of GR था, देखो इधर इसको हम लिखते हैं root GR को हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट ऑफ जी इंटू रूट ऑफ आर। क्लियर है ना, ये रूट आर से ये रूट आर कैंसिल कर दिया मैंने, रिमेनिंग थिंग विल बी रूट ऑफ आर बाई रूट ऑफ जी है, ये दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, रूट ऑफ आर बाई जी। क्लियर, होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, that's great. We'll come to the next concept, energy of a satellite. क्या होता है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? देखो इधर मान लो ये अर्थ है, मास है में, एक्चुअली इधर एक प्लैनेट है, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच विल रिवॉल्विंग अराउंड एन अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहता है विद अ वेलोसिटी दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। क्लियर है ना? ओके, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग हियर, व्हाट आर द possible energies which it has, we need to write down. First one, if it is moving means मूव होने के वजह से एक एनर्जी आता है और सैटेलाइट को which has a mass m, that moving energy we called kinetic energy. If I am walking means when I am walking there is an energy with me, we call that one as an kinetic energy. That kinetic energy can be written as half m v naught square. Why v naught means ऑर्बिटल में रोटेट हो रहा है ना, इसलिए। क्लियर है ना?
I will call this equation number 1. Kinetic energy का equation क्या आ गया, mv0 square. But हमको पता है v0 का वैल्यू क्या है, under root of gr, or else we can write this one as an under root of gm divided by r also. These two are the equation for the orbital velocity. ठीक है ना? Right, what I'm saying is a small r. Sorry, small r है. Just a minute, I will rub that one and I will write it in a proper way. It will give the clear idea. Gm by r. Correct now? Now, देखो. What I will do, I will substitute this v0 value in this equation number 1. v0 value को इधर substitute करो. Then kinetic energy क्या आता है देखो, of m v0 square. Square करने से इसको square करना है. I will write again gm divided by small r whole square. This square and square root cancel होता है ना. Then kinetic energy value will be आता है of m g capital M divided by r. इसको rearrange करने से क्या मिलता है, g capital M small m divided by 2r. Call equation number 2. This is what the kinetic energy of the satellite which is revolving around the planet. Clear है ना? Kinetic energy मालूम होगा ना? Let me know in a chat box how I derived the kinetic energy. इधर एक क्वेश्चन आता है, नीट क्वेश्चन आता है, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, केप्लर्स लॉ एंड एक कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, सैटेलाइट्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट में. इज इट क्लियर राइट? GMM by 2R. बल्लारी, बिजापुरा, चित्रदुर्गा, ऋतुजा, तृष्णा, कोमला. क्लियर? Okay, that's good. Okay, next concept क्या है ना? Okay, kinetic energy done. इधर एक मास है, स्मॉल मास m, इधर एक कैपिटल मास है, पूरा अर्थ. ये दोनों को बीच में और एक एनर्जी आता है ड्यू टू देयर सेपरेशन पोजीशन. कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी. Yesterday we defined potential energy. No, potential energy is nothing but negative of the work done. Negative of the work done सॉल्व करने से हमको मिल गया था एक इक्वेशन. जस्ट 2 पेज पलट दो, ये इक्वेशन मिलता है हमको. G कैपिटल M स्मॉल m divided by R. This is the equation for potential energy. Right? Directly I am writing. ये potential energy के लिए इक्वल है. I'm not solving again, because yesterday and day before the yesterday we used this equation. That's why potential energy हो गया and as well as kinetic energy भी हो गया. ये दोनों मिलाने से क्या मिलता है हमको? If we combine potential energy and kinetic energy, what we will obtain? Let me know in a chat box once. Kinetic energy plus potential energy मिलाने से क्या मिलता है हमको? That's it. क्या मिलता है? टोटल एनर्जी मिलता है. देन इफ एन ऑब्जेक्ट, सुनो ध्यान से सुनो, इफ एनी ऑब्जेक्ट which has a mass m which is rotating in a orbit, which is rotating in one particular orbit, means what will be its total energy पूछता है. क्वेश्चन ऐसे पूछता है what will be the total energy. सब्स्टिट्यूट करो इधर. काइनेटिक एनर्जी कितना था? This is what the kinetic energy. Substitute here. G capital M small m divided by 2R. Potential energy कितना है? This is a potential energy. Substitute करो इधर. Minus G capital M small m divided by R is equal to total energy. Common thing क्या है? ले लो एक बार, एक तरफ से ले लो. G capital M small m divided by R is a common from these two terms. Remaining thing will be 1 by 2 minus 1 is equal to total energy. 1 by 2 minus 1 means minus of 1 by 2. हाफ में minus 1 subtract करने से minus 1 by 2 मिलता है.
करेक्ट ना। एंड टोटल एनर्जी क्या आता है इधर इक्वेशन देखो, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर माइनस ऑफ 1/2। करेक्ट ना। इसको मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, डायरेक्टली आई विल राइट द इक्वेशन, व्हाई शुड आई डायरेक्टली, आई विल राइट अगेन, ओके लिख दो। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। 2r देखो, टोटल एनर्जी भी मिल गया हमको, करेक्ट ना, राइट। हाँ, that's great. Why I'm writing this one, I will explain you now. Potential energy को not, it will not equal to potential energy, buddy. Just check it once. Total energy किसको equal हो रहा है? Buddy, check it once. Total energy is equal to which quantity? Negative sign हटा दो. Don't worry about the sign. Sign will give the direction. Okay. किसी को equal हो रहा है देखो. I will write here once again. Energies, all the energies I will write. Kinetic energy value आ गया था हमको of means G capital M small m divided by 2r आ गया था, करेक्ट ना। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आ गया था हमको माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। टोटल एनर्जी हमको मिल गया माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। इधर देखो रिलेशन कैसा है। Yes, I will do. I will take. या देखो ये तीनों एनर्जी लिख दो एक साथ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೂರು ಎನರ್ಜಿನು। ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 2 3 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್। ಹಾ, ನೌ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್, जस्ट अ मिनट, लिख दो इसको। Hope it is clear, right? This page is clear. Shall we move to the next slide? Guys, try to participate in chat box. At least I need notification. Give a thumb response or put a message in a chat box. Yes, sir. We should move. Yeah, that's good. Okay, ये तीनों इक्वेशन देखो एक बार कैसा है। देखो इधर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, करेक्ट ना। यस यस, एक्चुअली इधर पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑफ हो रहा है ना, इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड करने के लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी। इन अ सिमिलर वे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को इक्वल होता है 2 टाइम्स के लिए, इक्वल नॉट ग्रेटर। इफ यू मल्टीप्लाई, देखो इधर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय r था, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r है, 2r है ना। ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, this is potential energy. Yeah, when it will be equal, if you're going to multiply with 2 no to the kinetic energy, here क्या होता है 2 2 आता है, cancel होता है, GMM by r GMM by r equal होता है, correct ना। That's why we can write here potential energy will be equal to 2 times of kinetic energy, or else it is equal to 2 times of total energy. This is the equation guys, which is very important. This is the previous year NEET question, NEET question है। कितना सिंपल है ना नीट क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विल मूव। I think today also Kepler's law I am unable to do. I think if I am not doing Kepler's law today means tomorrow first concept will be Kepler's law होता है, उसके बाद later on the Kepler's law I will start the thermodynamics tomorrow.
First I will complete it and later on I will start the thermodynamics. Cool. Okay, we'll move to the next slide. Okay, देखो इधर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराता हूं मैंने एक. ओके, सुनो ध्यान से सुनो. टू सैटेलाइट्स A and B, दो सैटेलाइट्स है A and B, launched at an altitude of R and 3R from the Earth. देखो ये अर्थ है, टू सैटेलाइट्स है हमारे पास. ये इज लॉन्च एट एन आल्टीट्यूड ऑफ आर. आल्टीट्यूड मींस सरफेस से कितना हाइट से लॉन्च कर रहा है वो उसको कहता है आल्टीट्यूड. कितना दूर से, आर डिस्टेंस से इधर से ये सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है मैंने. ओके, सेकेंड सैटेलाइट है ना, उसको मैंने लॉन्च कर रहा हूं 3R डिस्टेंस से, इधर से 3R डिस्टेंस. Okay, find their ratio of the kinetic energies. What they are asking? They are asking the ratio of the kinetic energy पूछ रहा है. Means मान लो this is A satellite, this is B satellite. Kinetic energy of A to the kinetic energy of B find out करना है. मालूम हो रहा है ना? Kinetic energy के लिए इक्वेशन क्या मिला था हमको? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2R मिला था. दिस इज फॉर ये डिवाइडेड बाय लिख रहा हूं मैंने इधर, देखो डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी वे क्या होता है, सेम G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. जस्ट अ मिनट, 2R रहता ना. काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन क्या मिला था हमको, 2R ओनली. ओके, हियर डिवाइडेड बाय 2R होता है. इफ इट इज कम्स टू न्यूमरेटर मींस न्यूमरेटर को आता है, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर. हेंस आई विल राइट दिस वन एज एन 2R हियर. एक क्वांटिटी को रब करता हूं मैंने, राइट. इफ यू आर गेटिंग डाउट मींस प्लीज लेट मी नो. ओके, G कैपिटल M स्मॉल m, दिस इज फॉर B. रेशियो निकाल रहा है ना हम, इसलिए. देन देखो GMMM कैंसल, बिकॉज दिस टू सैटेलाइट है ना, उसका मास नहीं दिया है. दैट्स व्हाई वी नीड टू थिंक लाइक दैट. मास ऑफ द टू सैटेलाइट विल बी इक्वल, दोनों इक्वल है. ओके, ठीक हो गया. देन दिस रेशियो विल बी बिकम इक्वल टू 2R ऑफ B डिवाइडेड बाय इधर 2R ऑफ ये हो गया, करेक्ट ना. नाउ ऑल आर सॉर्टेड. वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ R. R का पोजीशन लिखना है. R क्या होता है, टेल मी. फॉर अ फर्स्ट सैटेलाइट ये के लिए R का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द R वैल्यू, लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? I'm expecting the answer from everyone. Krishna, Rutuja, Komala, Jainvi, Chitradurga, Bijapura. Let me know what is the value of R for a first satellite. R value क्या होता है? R value will be center of the planet to the satellite. From the center of satellite to the Earth's surface radius है. That's why R value will become here 2 times the R. Right? For the second satellite, R value will become from the center of a satellite. This is R plus 3R. It will become 4 times the R. Correct ना? Substitute these two values here. B value के लिए 2 into R value कितना था? 4R. 4 times the R divided by denominator 2 into R value for a first satellite क्या आता है? Distance 2R. मीन्स 2 टाइम्स दी आर. 2 से 2 कट गया, R से R कैंसल हो गया. देन इट विल बिकम 4/2. इट इज नथिंग बट 2/1. मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द B satellite will their ratio will be equal to 2:1. This is a neat question. Understood, right? For everyone, I'm asking for everyone. Let me know. Is it understood, right? अरे यार बोल दो ना. I'm waiting.
Yes, good. If it is understood means similar way, this is a question to you people. Homework. Same question. You need to find out the ratio of potential energy. Means potential energy of A to the potential energy of B. Tomorrow I will ask what is the ratio of the potential energy. Same question है. R and 3R है. Okay. Potential energy ratio क्या आता है? आपको बोलना है मुझे. Right? Same question. There is nothing is changed. First planet के लिए distance R था. Second planet के लिए 3R. But you need to find out the ratio of potential energy. Okay, we'll come to the interesting part of a session. Actually, in a last minute we are talking. Geostationary satellites is one of the important topic in gravitation. Okay, geostationary satellite mein, actually we are talking about the geostationary satellites, but the satellites means not only in a particular, means we are not, all the satellites will be not in a particular orbit from the earth surface. मान लो देखो इधर एक फिगर है, करेक्ट है ना? इन दिस फिगर यू माइट बी ऑब्जर्व हियर, दिस इज अर्थ. अर्थ के ऊपर मैंने लिखा है थोड़ा ऑर्बिट्स को इधर मेंशन किया मैंने. दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट. राइट? Whenever we are launching the satellite to the orbits which are revolving around the earth, we are not launching the orbit, all the satellites in a single orbit. एक first orbit ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ first orbit ಗೆ ಎಲ್ಲಾ satellites ನ launch ಮಾಡಲ್ಲ. It is depending upon the usage, or else ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, it is depending upon the application. ಹೇಗೆ means मान लो, just think like this. You want to store the water in your home means ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you might be buy one syntax, or else so you might be bought one syntax ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, or else small quantity ಇರುವಂತ ಬಿನ್ಗೆನಾರು ತರಬಹುದು, or else you might be take a water bottle also. Right? All they are stores the water only. Syntax ಆಗಿರಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, water bottles ella. Right? If you are going to put a syntax there means their application is different. To store large amount of water you are going to install the syntax. Water bottle, you should, that is also stores the water only, but utilization is different from the syntax. In a similar way, if we are putting a satellite in a orbit around the earth surface means depending upon the application we are going to put the satellites in a earth orbit. कैसे? मान लो if you want to find out the weather condition means weather condition को find out करना है means we are going to launching a satellite whose orbit will be very less, means very lower to the earth, or earth से बहुत कम height में होता है, बहुत कम height में होता है. उस orbit we are going to call here first, बोल दिया ना मैंने, first orbit. This orbit we called as an Leo. Leo is not a zodiac sign. It's not a zodiac sign. Okay, Leo stands for lower earth orbit. Leo stands for lower earth orbit. Right? It ranges from the earth surface, from the surface of the earth to, it is around 200 kilometer होता है. Maximum 200 kilometer होता है, I think. Okay, it is starting from 200 kilometer up to 20,000 kilometer तक. 2000 हो गया ना, 20,000. Okay, 2000 kilometer. Up to this distance we call the orbit as an Leo, means lower earth orbit. Okay, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ನಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need some satellites, right? For that reason we are keeping the satellites in a Leo. Leo means lower earth orbit, whose range will be 200 kilometer to 2000 kilometer होता है. Right? Okay. And if we are going to keep on satellite in this orbit means this satellite का time period means one round
ಈ ತರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ it will take the time around 1 hour 30 minutes. क्या होता है 1 hour 30 minutes? Around 90 minutes. In 90 minutes it will cover one complete round. It will cover one complete round around 90 minutes में, right? And come to the second one. Second one क्या है? MEO. MEO means middle earth orbit. इसका रेंज होता है 2000 kilometer to 36 kilometer. Up to this range the orbit will be, we are considering, or satellites we are launching, we call that one as an MEO, middle earth orbit. Clear है ना? Next आता है GEO. GEO stands for Geostationary Satellite. ये मीनिंग ये दे रहा है, जियो मीन्स एक्चुअली अर्थ सरफेस है ना, अर्थ को हम कहते हैं सोशल में जियोग्राफी, मीन्स जियोग्राफी, यू नो राइट. जियो स्टेशनरी बोल रहा है, स्टेशनरी और सैटेलाइट्स मीन्स ये होता है अराउंड मोर देन द 36 किलोमीटर के ऊपर, राइट? किलोमीटर के बाहर होता है. इफ आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन सैटेलाइट एट दिस पॉइंट, मान लो दिस इज अ सैटेलाइट, okay, this earth is also rotating in this direction, satellite also will be rotate, right? What I'm saying, ये दोनों का रोटेशन पीरियड होता है ना, वो सेम होता है. अर्थ विल रोटेट अराउंड 30 degree, means this is also rotate the same 30 degree, it will become here. When you are watching the satellite, if you are going to see the satellite from the earth surface, means you will be, that satellite will be looking like stationary, because earth ಭೂಮಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ स्पीड the satellite is rotating around the earth. means इसका टाइम पीरियड होता है around 24 hours. means earth rotation period also 24 hours, इसको भी 24 hours. means it will looking like a stationary object, right? Why we are launching the satellite to this orbit means geostationary, actually to get the network signals. ನೀವು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, when you are talking of phone means the signal will be go for the geostationary satellites, okay? From here you are talking means it will go like this and it will reach the person to whom you called, correct na? This will be happen within a fraction of second, right? And also you know very well, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, right? On your home you people you are install the dish, right? डिश ऐसे होता है घर के ऊपर, it will be fixed to the one particular direction, okay? This dish is actually fetching the signals from the geostationary satellite, right? Because if it is rotating means earth also rotating, earth के साथ साथ actually we are also rotating, means it is actually looking very it is looking actually stationary object. That's why it will fetch the signals in a constant way. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇದೆ, okay? I'm not going to extend this session furthermore. And this is geostationary satellite means उसका time period होता है 24 hours in a one day. LEO means lower earth orbit. Here satellites will be revolve in one orbit खत्म करने के लिए time period लेता है 90 minutes. इधर MEO में, MEO I didn't told you, actually इधर time period होता है 12 hours. means in one day the satellite will be revolve around the earth orbit 2 times. This is the MEO, okay? However, this is all about geostationary satellites. Tomorrow I will complete this syllabus first. Kepler's law I will complete, okay? Based on this application I will explain this topic again, and I will start the thermodynamics. Cool, right? Is it understood right for everyone up to this point? I'm asking everyone, is it understood to everyone, right? Good, good. Message में बोल दो यार तुम. Okay, it's good. Yes, okay guys, we'll see you in a tomorrow class. Until then, take care, bye bye. Bye.
Meanwhile, if you have any doubt, means you can stay in a call and you can ask the doubts also. I will try to resolve your doubts. No doubt? It's fine. Okay, bye-bye.